नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कपिल गंभीर। आप देख रहे हैं कृधा प्रोडक्शंस। दोस्तों, अनिल देशमुख, सचिन वाजे और परमबीर सिंह की ये तिकड़ी बड़ी मशहूर है। इस तिकड़ी का जब तक गठबंधन था तब तक इन्होंने महाराष्ट्र और मुंबई में खूब मजे लूटे। करोड़ों के नीचे की तो ये बात करते ही नहीं थे, क्योंकि एक एक करके जब इनके भेद खुले, जब एक दूसरे की इन्होंने पोल खोलनी शुरू कर दी, तो कुछ एक करोड़ नहीं बल्कि अरबों रुपए के खुलासे होने लग गए। और जब इस तिकड़ी का घोटालों वाला गठबंधन टूटा, तो एक ने दूसरे का नाम लिया, दूसरे ने पहले का और पहले ने तीसरे का। तीनों एक दूसरे के पीछे पड़ गए। खासतौर से अनिल देशमुख एक पार्टी बन गए, वहीं परमबीर सिंह और सचिन वाजे दूसरी पार्टी। 100 करोड़ रुपए वसूली मामले में वाजे और परमबीर ने अनिल देशमुख को ऐसा घेरा, ऐसा फंसाया कि अनिल देशमुख जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं और आज की डेट में वो सीबीआई के हत्थे चढ़ गए हैं। और कल जिस खबर ने एक उम्मीद की किरण जगाई, वो ये कि परमबीर सिंह के खिलाफ जो भी केसेस मुंबई पुलिस ने दर्ज किए, वो सभी केसेस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिए गए हैं। और सीबीआई ने उन केसेस को लेकर एक नई एफआईआर भी दर्ज कर दी है और जांच भी तेजी से शुरू कर दी है। और सबसे बड़ी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ये संज्ञान ले रखा है कि परमबीर सिंह ने भले ही अनिल देशमुख का भेद खोला हो, 100 करोड़ रुपए वसूली मामले को लेकर अनिल देशमुख का भेद खोला हो, लेकिन परमबीर सिंह खुद भी दूध का धुला नहीं है। ये बात बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कही और इसलिए इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि परमबीर सिंह भी एक बहुत बड़ा सस्पिशियस पर्सन है, बहुत बड़ा संदिग्ध है। और अब सचिन वाजे की कस्टडी सीबीआई के पास है। आप जानते हैं अनिल देशमुख की कस्टडी भी सीबीआई के पास पिछले ही हफ्ते आ चुकी है। वो बात अलग है कि सीबीआई के पास जाने से पहले अनिल देशमुख की रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया था। ना जाने कितने बहाने बनाए, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। जब जेल में उन्हें लेने गई सीबीआई की टीम, तो जेल से सीधा सीबीआई के पास नहीं बल्कि पहुंच गए अस्पताल। लेकिन 2 दिन बाद उन्हें हॉस्पिटल से वापस जेल आना पड़ा, जिसके बाद सीबीआई ने उनकी कस्टडी ले ली। सीबीआई उनसे तमाम तरह के सवाल कर ही रही होगी। ना जाने आने वाले दिनों में और कौन सा बड़ा खुलासा हो जाए, ये ध्यान रखिएगा आप। और इन सबसे बढ़कर परमबीर सिंह भी आने वाले दिनों में जरूर गिरफ्तार होंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इस बात में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। सीबीआई को सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच करनी है। आज सुशांत सिंह राजपूत केस मामले को लेकर पूरे 22 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केस अभी बंद नहीं हुआ है। ये सीबीआई पिछले ही हफ्ते साफ कर चुकी है। वजह कोई भी हो, लेकिन सीबीआई का एक छोटा सा बयान आया था कि सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच अभी चल रही है, ये मामला अभी बंद नहीं हुआ है और इस बारे में सीबीआई कुछ बता नहीं सकती है, जिससे क्योंकि जांच में असर पड़ सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह रखा है कि सुशांत केस से जुड़ा कोई भी केस हो, सीबीआई कोर्ट से इजाजत लिए बिना उस केस की जांच कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं, जी हां कहीं ना कहीं, वाजे, देशमुख और परमबीर की झोल झपाटे वाली तिकड़ी सुशांत केस में सवालों के घेरे में पहले ही दिन से है। क्योंकि जिस दिन सुशांत इस दुनिया से गए थे, तब अनिल देशमुख महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर थे, परमबीर सिंह मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे और सचिन वाजे क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट के इंचार्ज। सोचिए, एक ऐसा एक छोटा सा अदना सा पुलिस वाला, उसे क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट का इंचार्ज बना रखा था। अब इन तीनों के तीनों में गड़बड़ियां बहुत दिखी हैं। मंत्री यानी अनिल देशमुख ने जांच के लिए मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच की जरूरत है ही नहीं, हम सीबीआई को मुंबई आने नहीं देंगे, मुंबई पुलिस सक्षम है सुशांत केस की जांच करने के लिए। बिल्कुल पाला झाड़ दिया था उन्होंने, बिल्कुल सिफारिश करने से मना कर दिया था कि सुशांत केस की सीबीआई जांच ना हो। वहीं कमिश्नर यानी परमबीर सिंह इस केस को शट एंड क्लोज केस बताकर मामले को रफा दफा करने की पूरी तैयारियां कर रहे थे। एक के बाद एक उनके घोटाले, उनकी चीजें सामने आ रही थी। जिस तरह से अर्नब के चैनल को इन्होंने दबाया था, रोका था, वो सब जग जाहिर था। और एक अदना सा पुलिस वाला यानी सचिन वाजे को मुंबई में बहाली के तुरंत बाद बड़े बड़े केसेस दिए गए। जी हां, वही सचिन वाजे जिसकी बहाली
2 करोड़ रुपए की रिश्वत के बाद हुई थी। ये बात इसने खुद कबूली है ईडी के सामने, यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने। और परमबीर सिंह ने भी यही बात कही थी कि अनिल देशमुख ने, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर जो कि एक्स हो गए हैं, उन्होंने 2 करोड़ रुपए लिए थे इसकी बहाली के लिए। अब जरा सोचिए कि ये क्या क्या कांड नहीं करता होगा सचिन वाजे। महाराष्ट्र सरकार का वो चहेता बताया जा रहा था। सचिन वाजे महाराष्ट्र सरकार का चहेता था, उनके इशारों पर चलता था और जो कुछ भी वो लोग कहते थे ये करता था। उसे पहले से ही ये सब करने की महारत थी। क्राइम सीन में कैसे छेड़छाड़ करनी है ये उसे महारत थी सचिन वाजे को। और एंटीलिया बम कांड में उसने एक सबूत भी दिया, किस तरह से उसने अपने ही दोस्त को, बताया जा रहा है कि उसका बहुत पुराना दोस्त था, उसको ही जान से मार दिया। ये आरोप एनआईए ने सचिन वाजे पर लगा और पता चला कि उसने भेद खुलने के डर से अपने ही दोस्त को जान से मार दिया। सचिन वाजे ऐसा कर्मकांडी निकला। अब दोस्तों ऐसे में इस केस पर इन तीनों पर सवाल क्यों ना उठे, चाहे वो सचिन वाजे हो, परमबीर सिंह हो या फिर अनिल देशमुख हो। इसलिए समय की मांग ये है कि वाजे, परमबीर और देशमुख को एक साथ बैठाकर ना सिर्फ करोड़ों की वसूली की जांच करनी चाहिए सीबीआई को, बल्कि सुशांत केस में अगर इन तीनों में से किसी एक ने भी कुछ उगल दिया, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बहुत बहुत मुमकिन है कि सचिन वाजे और परमबीर सिंह को सुशांत केस के बारे में बहुत कुछ पता है, तो सुशांत केस की कड़ियां खुल जाएंगी अगर इनमें से किसी एक ने भी अपनी जबान खोल दी तो, बशर्ते सीबीआई की मंशा सही हो। और अगर सीबीआई कुंभकर्ण की गहरी निद्रा से अगर जाग जाएगी तभी ये सब कुछ हो पाएगा। और अगर नहीं जागेगी सीबीआई तो सीबीआई को जगाना होगा और हमें लगातार उनसे सवाल करने होंगे कि भाई सुशांत सिंह राजपूत केस का आपने क्या कुछ किया। तो इस तरह से इन सभी को लेकर सवाल उठे थे और सवाल उठाए थे सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह ने भी एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था, मैंने उस ट्वीट के बारे में आपको कल भी बताया था, जिसमें उस ट्वीट में प्रियंका जी ने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर सचिन वाजे, परमबीर सिंह और अनिल देशमुख की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सचिन वाजे और परमबीर सिंह दूसरे केसेस को लेकर अपने ऊपर के आला अधिकारियों के ऑर्डर्स लिया करते थे, झोल झपाटे किया करते थे, हो सकता है, बहुत मुमकिन है, उनका इशारा इसी तरफ था कि बहुत मुमकिन है कि सुशांत केस में भी इन्होंने कोई बड़ा गड़बड़ घोटाला किया हो, इसलिए सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने ये ट्वीट किया था। और इसी ट्वीट को लेकर मैंने सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह से सवाल किया था जब वो दिल्ली में ग्राउंड प्रोटेस्ट में मुझे मिली थी, और मैंने जो सवाल किया था मैं आपको वो वीडियो एक बार फिर से दिखाता हूं। ये देखिए उन्होंने इस पर क्या जवाब दिया था, ये जानना आज बहुत जरूरी है, क्योंकि आज पूरे 22 महीने हो गए हैं सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर। ये सुनिए। ट्वीट किया था, रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, लेट्स स्मैश हिपोक्रेसी, न्यूडिटी, बहुत मतलब छिपे थे उस ट्वीट में। जी, आजकल आप बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई हैं, बहुत ज्यादा सामने आकर बोलने लगी, चाहे वो बात आपने सचिन वाजे को लेकर सवाल उठाया या फिर परमबीर सिंह को लेकर सवाल उठाया, तो आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, आपको भी लगता है कि बहुत जरूरी है आप सामने आकर खुलकर बोलने की अब वक्त आ गया। जैसे मेरे ट्वीट के माध्यम से ऐसा लग रहा है कि मैं अब सामने आ रही हूँ, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो चीजें, जो जानकारी, जो सबूत हमारे पास था वो हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी विच इज सीबीआई से ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं और शेयर करते आ रहे हैं। कुछ ऐसा पता चलता है तो हम उसको भी उनसे साझा करते हैं कि अभी नई जानकारी मिली है, तो वो तो हम हमेशा से करते आ रहे हैं। इट्स लाइक नाउ दैट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू राइट द टैगलाइन, वो सारी चीजें जो हमें इतना कहते हैं ना उसको हर्ट या जो हमें पैट्रियार्की एंड स्टफ लाइक दैट, उन्होंने बॉलीवुड के लोगों ने एक भी कहते ना पहलू नहीं छोड़ा जिस पहलू से उन्होंने सुशांत को अटैक नहीं किया है। Instead of coming together to support and to express the loss that the industry went through, be it whichever way, even if they didn't want to take names, they should have at least shown the solidarity, which was so obviously conspicuously missing. And in the contrary, they had the balls and the guts to come out with that patriarchy bullshit. So yes, I always had it against them, और शायद इस वजह से वो बात मैं बोल पाई। तो ये वो तमाम बातें जी जो प्रियंका सिंह ने मुझसे कही थी जब वो सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस के लिए खुद ग्राउंड पर आई थी। सुशांत के जस्टिस के लिए कुछ दिन पहले ही जब वो प्रोटेस्ट के लिए आई थी और बहुत बड़े सवाल सचिन वाजे, परमबीर सिंह और
अनिल देशमुख को लेकर कहीं ना कहीं कटाक्ष किया था, वो सारी बातें कही थी और सवाल उठाए थे बॉलीवुड वालों पर, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को सपोर्ट करने की बजाय, जी हां, सपोर्ट करने की बजाय सुशांत सिंह राजपूत के साथ घिनौना खेल खेला। सुशांत सिंह राजपूत को लगातार टारगेट किया, ना सिर्फ जब सुशांत सिंह राजपूत जिंदा थे, बल्कि सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद भी बॉलीवुड ने किस तरह से टारगेट किया, ये सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह भी अच्छे से जानती हैं। तो ये सारी बातें उन्होंने उस समय कही थी। और अब मैं इस समय आपके जो टैगलाइन ट्रेंड कर रहे हैं उसके बारे में जिक्र करूंगा। जो सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह जो डेली टैगलाइन सजेस्ट करती हैं, उसे लेकर अभी शाम की जो टैगलाइन उसको मैं पहले दिखाता हूं कि किस टैगलाइन को लेकर कितने ट्वीट आ रहे हैं और क्या कुछ ट्वीट है। मैं थोड़े से ट्वीट पढ़ूंगा, फिर आपके मैं कुछ कमेंट्स जरूर पढ़ना चाहूंगा। जस्ट सेकंड। ये देखिए, मिस यू सुशांत यूनिवर्स मच, ये है टैगलाइन जो सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह ने आज सजेस्ट की थी। और अभी इसको लेकर करीब 18,000 ट्वीट्स हो चुके हैं और कुछ मैं ट्वीट्स इसमें से पढ़ देता हूं। मनीषा जी लिखती हैं, सुशांत सिंह राजपूत, a name written on my heart whenever I miss you, I look at my heart because it is the only place I can find you. तेरा ना होने से बस इतनी सी कमी रहती है, मैं लाख मुस्कुराऊं आंखों में नमी सी रहती है। तो इस तरह के ट्वीट आप देख सकते हैं। एक खुशी लिखती हैं, like universe is endless, you and your love is endless, you are like moon to spread lightness and joy when the everyone is in dark, and then spread positivity like sun when there is full of light, so that we light up in the right path in life. Miss you सुशांत यूनिवर्स मच, यानी कि पूरी यूनिवर्स सुशांत सिंह राजपूत को मिस कर रही है। गौरी लिखती हैं, distances do not matter, those who are absorbed in the depths of the heart do not forget. गौरी लिखती हैं। और कुछ और मैं ट्वीट्स पढ़ूंगा, फिर आपके कमेंट लूंगा। शाइनी लिखती हैं, every day I discover that I love you even more, and in this infinite universe I will love you to the ends. Miss you SSR. और प्रीति जी लिखती हैं, on every 14th your memories keep on rolling and we become more restless for the much awaited justice you deserve. यानी कि वाकई ऐसा होता है कि हर 14 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत की जो यादें हैं वो वापस आ जाती हैं और बहुत से लोग रेस्टलेस हो जाते हैं। होप यू आर इन बेटर प्लेस नाउ, एम्ब्रेस्ड बाय महादेव, माफ कीजिएगा, एम्ब्रेस्ड बाय महादेव, उषा मैम, मिस यू सुशांत यूनिवर्स मच। ये इस तरह के आप ट्वीट्स आप देख सकते हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए अभी भी लगातार 22 महीने से जो ऑर्गेनिक मूवमेंट चल रहा है, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और ना ही शायद खत्म होगा तब तक जब तक ये जस्टिस आगे बढ़ नहीं जाता, जस्टिस मिल नहीं जाता। मैं आपके अब कुछ कमेंट पढ़ देता हूँ। यूलिंग लो लिखती है, गुड इवनिंग सर, आई लव Ama Goswami, director TV, sir, please get justice for Sushant sir, arrest Riya on all her family too, sir, we are waiting good news for you from you, sir. Thank you so much यूलिंग जी। बस मेरे पास जो भी खबर आती है मैं आपके सामने लेकर आता हूँ और जैसी भी कोई बड़ी अपडेट आती है मैं आपके सामने जरूर लेकर आता हूँ। और जैसे कि परमबीर सिंह को लेकर जो कल बड़ी अपडेट आई थी वो मैंने बताया और उसका एक और वीडियो आज मैंने बताया। और सूरज जी लिखते हैं, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत 302 एंड दिशा सालियन 302, सीबीआई जल्द जवाब दो। एब्सोल्युटली सीबीआई को जवाब तो देना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना भी छिपा ले, लेकिन जवाब तो एक दिन देना पड़ेगा। रीता दास जी लिखती हैं, हाय सर, गुड इवनिंग रीता दास जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गुड इवनिंग। सीबीआई को खुलानी पड़ेगी और हम सब एसएसआरएन 302 के बाद रुकेगी जब तक कातिलों को अरेस्ट ना करेगी, किसी को अच्छे से सोने नहीं देगी हम सब। एब्सोल्युटली रीता दास जी आगे लिखती हैं, देश हम सब का है, हम सब के वोट से मिनिस्टर बनते हैं तो जानने का क्यों छीनते हैं। एब्सोल्युटली रीता दास जी, थैंक यू सो मच। अंजुमन राखी लिखती हैं, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत फ्रॉम बांग्लादेश, थैंक यू सो मच अंजुमन जी फॉर वाचिंग इट फ्रॉम बांग्लादेश, थैंक यू सो मच। और सुंदरम जी लिखते हैं, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। और रेखा शाह ने लिखती हैं, जस्टिस फॉर एसएसआर, जस्टिस तो हम लेकर रहेंगे। अमन लिखते हैं, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, एसएसआर जैसा कोई नहीं। एब्सोल्युटली रेखा जी, वेल सेड। और प्रितपाल कौर, हेलो सर, जस्टिस फॉर एसएसआर, हेलो प्रितपाल जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नीतू जी लिखती हैं, मिस यू अ लॉट एसएसआर। और हाय सर, जस्टिस फॉर एसएसआर। कुकू जी लिखते हैं, हाय कुकू जी। और शिल्पी आनंद कहती हैं, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत तो हम लेकर रहेंगे। एब्सोल्युटली शिल्पी जी, बिल्कुल लेकर रहेंगे और ये लेने का हमारा अधिकार है और हम जब तक जस्टिस नहीं मिल जाता सुशांत के लिए हम यूं ही आवाज उठाते रहेंगे। और मैं आपको कुछ गंगा आरती जो कि सुशांत सिंह राजपूत की बहनों ने बनारस में
2 दिन पहले की थी सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस के लिए बनारस से, जो वीडियोस तस्वीरें मैं आपको लगातार 2 दिन से दिखा रहा हूँ। कुछ और वीडियोस मेरे पास आए हैं, वो वीडियो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। मैं 1 सेकंड आपका लूँगा, जस्ट अ सेकंड। उस वीडियो में आप देख पाएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत की दोनों बहनें प्रार्थना कर रही हैं सुशांत के जस्टिस के लिए, और कामना कर रही हैं कि जल्द ही सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिले। उनके साथ सुशांत सिंह राजपूत, मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट ही दिखाता हूँ। जस्ट अ सेकंड। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यस हियर इट इज। ये आप देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की बहनें हैं, दोनों बहनें, और एक तरफ एक्सट्रीम राइट में सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह, सेंटर में प्रियंका सिंह, पीछे ममता काले जी और उनके साथ प्रीति पांडे। ये सभी के सभी गंगा आरती में शामिल हुए थे। बाकायदा दिल्ली से ये सब गए थे सुशांत सिंह राजपूत की बहन का साथ देने के लिए, प्रियंका और मीतू का साथ देने के लिए। और पीछे नीलोत्तम तमिलाल जो कि मुंबई से आए थे, और प्रशांत जो कि पटना बिहार से थे। ये सभी वहां पर गंगा आरती उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के लिए की, और महाअभियान की शुरुआत की सुशांत सिंह राजपूत के लिए। और एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जस्ट सेकंड। इसके बाद मैं एक और वीडियो प्ले करूँगा, पहले आप ये देख लीजिए। ये कुछ तस्वीरें, ये एक और तस्वीर, ये एक और वीडियो, ये देखिए। ये वीडियोस मुझे प्रशांत इंसाफ एसएसआर, जो कि प्रशांत हैं, इंसाफ एसएसआर से जुड़े हैं, पटना बिहार से हैं, वो उन्होंने मुझे ये शेयर किया था आज अभी कुछ देर पहले ही। तो मुझे लगा कि इस वीडियो को भी मैं आपको दिखाऊं। और ये वो सुशांत सिंह राजपूत की बहनों का और पूजा आरती जो कि की गई सुशांत सिंह राजपूत के लिए, वो तस्वीरें, ये वीडियोस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ममता काले, प्रीति पांडे, मीतू सिंह, प्रियंका सिंह, प्रशांत, नीलोत्तम तमिलाल, ये सभी एक साथ इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के लिए महाअभियान शुरू किया। ये परसों का ही वीडियो है। और ये तस्वीर, एक और तस्वीर शायद इसे आपने अभी तक नहीं देखा होगा। ये एक और तस्वीर, तो ये वो तमाम तस्वीरें, तमाम वीडियोस हैं जो बनारस से आए थे, और सुशांत की दोनों बहनें वहां बनारस गई थी सुशांत सिंह राजपूत। ओके, मिशेल हमारे साथ जुड़ी हैं। यस मिशेल, व्हाट डू यू वांट टू से? Hello, can you hear me? I was just trying to watch the videos from yesterday. I'm not able to see it, but just today I'm just able to see. It's very heart-touching. But Yes. if you go to see, a lot is happening, and his pure soul is really working great wonders. I just came across Dr. Bhupesh's video this morning, and it looks like there is a lot of positive news coming up. There's a lot of positive news coming up, and hopefully very soon there will be 302 coming up in Sushant's case as well. Absolutely, Michelle. Very soon. बिल्कुल मिशेल। और जब से परमबीर सिंह जब से सीबीआई के हत्थे चढ़े हैं, और जब डायरेक्टली सीबीआई ने एक नई एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज की है, तो उससे तो मुझे बड़ा ही एक ग्रीन सिग्नल मिलता है। परमबीर सिंह ही नहीं, नवाब मलिक भी सीबीआई के हत्थे चढ़ा हुआ है। जी, नवाब मलिक भी उनके हाथे चढ़ा हुआ है। अभी ये सब लोग सीबीआई के हाथे चढ़े हुए हैं। अनिल देशमुख, सचिन वाजे, परमबीर सिंह और अभी नवाब मलिक भी, सब लोग सीबीआई के कब्जे में है अभी। Now the only thing is we are looking forward for, I hope and I pray, since these are our days, like, you know, today, tomorrow is our Good Friday. It's the last day of our Lent and the most powerful day for us as well. And
strongly pray that tomorrow, on the last day of our on the last day for the resurrection of our Lord, I pray that God should work a very big miracle for our pure soul. And Absolutely, mission. they should also take this guy, this Pitani, into their custody. And they should also give him some, like, very, very good cold third degree treatment Absolutely. and get out information, because he is the key mastermind. And I will be very happy. I will really be very happy the day they lay their hands on that Sandeep Singh. I will really be very happy the day they lay their hands on that man, Sandeep Singh, because that man is hiding. Absolutely. Because I have a very strong feeling, because that man is a man involved in our young child's murder. He is definitely involved in that murder. थाने तो ऐसा इंसान है जो सुशांत सिंह राजपूत का एक एक चीज जानता था, और इसलिए वो सुशांत सिंह राजपूत को अगर सीबीआई उसको रिमांड पर लेती है, लेकिन अफसोस की बात है अब तक उसको रिमांड पे लिया नहीं गया। अगर लिया गया होता वो कब का सारी चीजें वो उगल गया होता। because कपिल, अगर आप देखेंगे, अगर आप सोचेंगे, अगर आप उनके वीडियोस भी देखेंगे, तो उसके सर पे जो चोट आई हुई है, वो वो ऐसे ही नहीं आ सकते हैं। उसके वो जो चोट आई हुई है, वो इफ यू सी दैट, जो जगह पे आई हुई है, वो कुछ हाथापाई हुई है, मालूम है। एंड सुशांत जो है, सुशांत इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। वो तो हट्टा कट्टा जिम जाने वाला लड़का है। वो जो आइसक्रीम और चॉकलेट खा के भी जिम करने वाला लड़का है। हाँ, सही बात। और उसको कुछ भी इफेक्ट नहीं होता था। वो he used to not take all these power packs and use all these proteins and वगैरह वगैरह, वो सब उसको नहीं लगता था। वो अपना सब मिठाई वगैरह सब खाते थे। He used to have normal diets, ऊपर से उसको सब मिठाई चाहिए थी, सब कुछ चाहिए था नॉर्मल, ऊपर से उसको आइसक्रीम्स और चॉकलेट्स चाहिए था। वो सब खा के वो जिम करते थे, फिर भी वो इतना हट्टा कट्टा था। वो इतना हट्टा कट्टा लड़के के साथ में आप हाथापाई कर सकते हैं? नहीं ना, आसानी से तो नहीं कर सकते है ना। बिल्कुल नहीं। और ये जो लोग, जो ये नशेड़ी लोग जो है, ये नशेड़ी लोगों में तो कुछ दम ही नहीं होते है ना। सही बात है। फिर क्योंकि मुझे I know and I have an experience because of what I have seen to what these addicts are. They have no life in them. If you just even touch them, they are people who will fall. And ये जो पिटानी, ये रिया चक्रवर्ती, ये शोभिक, ये लोग, ये क्या है? These people have got strength in them to stand. They have nothing in them to stand. Where they could have been able to stand in front of Sushant? No way. तो सुशांत के साथ में हाथापाई हुई है, because the very size of the injury that Pitani had on his head is not a very small size. It's a very big size, and very, very big, very like, for the visibility of it is very big and very powerful. So on the night of 13th and the morning of 14th, there has been a scuffle that has taken place over there, definitely. इसका तो कोई शक ही नहीं है। Which is undoubtedly, they have to take cognizable this about it and work on that. And I do not know why CBI is still probably CBI is just trying to gather all the information. Instead of it, they
वो कहावत है ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकलती है तो टेढ़ी उंगली से निकलनी पड़ती है ना, तो उन लोग वही कर रहे हैं। तो वो सीधे उन लोगों को अटैक नहीं कर सकती है ना, तो वो घुमा फिरा के उन लोगों को अटैक कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात, तो वो सही बात है। ये नागपुर सर प्लीज कैरी ऑन। नागपुर से कानपुर तक नहीं जा सकते हैं ना, तो वो घुमा फिरा के वो गोल घुमा के आ रहे हैं उन लोग। आखिर में वही पॉइंट पे आके उन लोग अटक जाएंगे ना, सबके मुंह से वही निकलवाएंगे उन लोग। फिलहाल तो वही है उन लोगों का मकसद, और बाद में आके वो फंसने वाली है वही रिया चक्रवर्ती फंसने वाली है, साथ ही साथ में वो महेश भट्ट को डुबाओगी जी। उसके साथ में, महेश भट्ट के साथ में फिर बाद में जिया खान का केस भी ऊपर आएगा। Then बिल्कुल सही you see the dots will connect, because the moment that case comes up, Disha's case will automatically open up. Once Disha's case will open up, the dots will connect. Absolutely. And when the dots connect, and then Jia Khan's case will also connect. And Jia Khan's case will connect because there is nowhere in the world today, anybody has ever stood up for justice for anybody the way today the world is standing up for our little boy Sushant. Yeah. Nowhere. Absolutely. Another 2 months down the lane, it is going to be 2 years, but still today, in everybody's heart, everybody's mind, and everybody's soul, everybody's heart is still crying for him. Every moment, every video, every laugh that they see of his, everybody's eyes are tearing. Every word, every name that comes up, every time the video comes up, every time his name comes up, everybody's eyes tear for Sushant. Because he was such a pure, innocent, and lovely little child. He's touched everybody's heart. True. Genuinely touched everybody's heart. He was such a down-to-earth, such a pure, down-to-earth, humble little boy. Yes. Absolutely. That I don't think anybody ever has done so much in that industry today. Nobody. Yes. Nobody. Hats off. I really salute his parents. Hats off to that lovely parents of his. Hats off to them for that lovely childhood of his and that lovely upbringing of Sushant. And the lovely sisters who were always his, backbone. Who always sort of, kept him hatched together. Please carry on. Actually, I salute his sisters who really kept him together. Absolutely. Strong, never let him fall, and always were there behind him like his backbone more than anything. True. Really hats off to them. Absolutely. बिल्कुल टोटली एग्री विद यू मैम मिशेल, बिकॉज सच में परिवार के लिए आसान नहीं है। जिस तरह से कई लोग सवाल उठाते थे पहले, हालांकि अब बहुत सवाल उठने कम हो गए हैं क्योंकि परिवार खुलकर अब बोलने लगा है, और बिल्कुल भी आसान नहीं होता। इतनी बड़ी ट्रेजेडी अगर घर में हो जाए और सामने
किसी से भी अपनी फीलिंग शेयर करना कतई आसान नहीं होता, और परिवार आ रहा है, दोनों बहनें You're आ रही saying हैं। you're saying that couple. You're saying that couple. I will tell you very honestly. Yes, yes, please. Today is Monday, Thursday. Tomorrow is Good Friday. Day after tomorrow is Holy Saturday. Holy Saturday. You know, these 3 days are very difficult days for me in my life, How? because this is the festive season. Yeah. Mhm. And this is the season, this is our festival season where we family have to get together. It's a family festival. Yeah. Mhm. I'm in UK. I'm all by myself. Even if you say, if I go home, if I go to my hometown, I don't have my family there because I have lost all of them. It is so difficult, you know, when you are alone, you're a loner. Who do you look up to? Mhm. सही बात। Who do you look up to? Do you look up to your parents who are sitting on the wall over there at their pictures, at their photographs there? Mhm. You look at them and you get depressed. Absolutely. Who do you celebrate the festival with them? With whom? With no one. It is difficult when occasions It like is. this come, and you miss your own family members, and you can imagine how difficult it is for those four sisters who had only one brother. Yes. True. And what they may have had thoughts for him, what dreams they may have had for him, what dreams the father may have had for his son. Mhm. Yeah. Absolutely. How difficult it must be for him. Totally agree with you. Every time he Totally. sees the picture of his son, how difficult it must be. Mhm. True. You know, it says, you know, there is a saying, you know, we say it's a saying in English, you know. My father used to always tell me this. Remember, he used to say, we say, you know, I used to cry for a pair of shoes. Yeah, Mhm. until I saw a man with no feet. Mhm. So it is like Serious. that. The I the can see. meaning of that is like, we always cry about our sorrows, our sorrows, our sorrows. When we put ourselves in other people's place and see how deep are their sorrows. That's why I Absolutely. always say, we should never ever point fingers at somebody who has lost their loved one, and especially when it is a murder case. Never 200% agree. point fingers at them, because you do not know what they are going through, what that family is suffering. Mhm. Don't point fingers and don't question them, बिल्कुल सही बात है। because you need to let them grieve. You need to let them come out of the grief, and then you can stand by them to fight from that grief, and then stand by them to fight to solve the problem. Mhm. That can be your Right. true humanity. But don't point Yes. fingers and don't say something to hurt them, Mhm. which is not good. And I've and a lot of people, they don't understand these things. They just Mhm. whatever they say, Mhm. in Konkani they say, just because your tongue doesn't have a bone, it keeps rattling. Yes. If it had a bone, it would have been heavy. Mhm. So that shouldn't be. Think before you Yes. say something. Mhm. Think before you write something, because what you write, it remains. You Absolutely. cannot erase that. 200% agree with you. Because if we are standing up for somebody, we are fighting for somebody. Today, how many of these film stars are dead? How many of their deaths are mysterious? How many of them? Even you see this Sri Mhm. Devi and all.
Who has stood up for these people, Kapil? Did Hmm. anybody even care for these people? You tell me. No one. No one. Did they even care for these people? No one. They made so much of money. Did they even care for poor people? They never even Not thought at all. about poor people. But today, the whole world is fighting for our Sushant. Yes, ma'am. Today, the whole world is fighting for him. The whole world wants to know about his justice. The whole world is striking for his justice. Why? Because he was so loved, because he was so humble, he was so full of life, he was so full of love, he was so full of charity, he was so full of love for poor. Hmm. He himself was struggling. He himself was struggling to come shine, and he knew Hmm. what it was to struggle. True. And he himself was bringing up, he himself was helping poor to come up. Hmm. Absolutely. And that is why people today, the whole world loves him. There is no doubt about it. Right. There's absolutely no doubt about it. Yeah. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Michelle. And Good Friday to you and to your near and dear ones. Happy Good Friday in advance from our side. I think you're from Thank UK, you. right? I'm from Portugal but working in UK. You're from Portugal. Okay. 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 Yeah. Okay. Yeah. Portuguese Nice. nationality. Uh-huh. Okay. Actually, Hmm. yeah, Portuguese origin, born in Okay. India. Oh, you born in India. Yeah, Oh, wow. yeah, Great. born in India. Hmm. But unfortunately, I had to leave India Hmm. because there were lots of attempts of threats to my life Hmm. in India. Okay. My father, my parents, my mom passed away when I was very small. She had Oh, she had I'm sorry. massive cardiac I'm sorry. arrest. My father was cold-blooded murder over property in India. Oh my God. I've got Seriously? lots of property in India. Yeah. Okay. Then I received quite a lot of threats over the properties in India. Oh my God. Yeah, and then a lot So of that's why you threats. left India and now Yeah, living in Portugal. lots of threats even from my mother's side of the family regarding Oh. properties and things. Mm-hmm. So I had to, because I couldn't afford to be taking, police protection all the time in civil, Mm-hmm. and I didn't like it. I Okay. hated all these things. So I had Okay. to change back to my nationality from give up the Indian nationality completely. Okay. I didn't bother about the properties, and although legally I have got quite a lot of properties and assets in India. Oh. And then Okay. I have Yes, yes, got please. one friend of mine who is in the police department down there, who is a crime Okay. branch officer, very good friend of Okay. mine. And Okay. uh, he's got two little boys. So I've done my legal will Mm-hmm. and I've transferred everything in case in my demise. Though I have got a brother who's as Okay. good for nothing Okay. brother who has got done Okay. nothing Okay. for me. Okay. Okay. I can understand. So he's married and he's settled, so he doesn't bother me, he doesn't look after me, he doesn't Oh. phone, Sad. nothing. Sad. So Sad. basically I'm alone. So what I've done is all whatever belongs to me, all my assets, everything, even what I'm working here, everything. Mm-hmm. I've done my Mm-hmm. will and it's on my friend's boy's name, both the boys, Okay. everything is for them. Okay.
Okay, So great. it's like Great. nobody gets nothing. Thank you so Anything much. Thank you happens, so much for sharing everything. Thank you so much. And everything thank you is so in much their once again. name. And yes, huh? So my friend, I've told him, like, in case anything happens to me and I No, pass please away. don't think like this. Please don't think like this. And No, don't I've say just like told this. him, it's like, in case anything You are a happens, I brave pass warrior, I away. must say. I pass away. I just told him, you have to just do my last rites. That's all. See, someone is writing, Michelle, you suffered a lot, and I would like to say that you are a brave warrior, and you speaks a lot with full confidence and all. I totally agree with you. Whatever you said about SSR or whatever, I totally agree with you. And please take care. And once again, I wish you a very happy Good Friday in advance to Thank all you. the Portuguese and you all and nears and dears one. Thank you so Thank much. you. Thank you. And would you like to say something in the end, or should I close this? Yeah, I would say, like, we always will stand up for the family of SSR as we are, and we will, Yes. till the end, we Hmm. will always stand up for him till we fight Hmm. for his justice, and we will always Hmm. stand up for his family. I will never Yeah. like anybody saying anything against his family. It hurts me a lot, and I don't like Yeah. it. Absolutely. 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 I don't like anybody raising a finger up to his family. Hmm. No way. True. I don't like these True, people who man. say anything against his family. Absolutely. Even I don't like them. Even I don't like them I at don't all. like them. It hurts me a lot. It hurts me a lot because I know what Yeah. it is, what pain is. Yeah. And we will stand up for our SSR, our little star, Yeah. superstar, Hmm. till the end. Thank you so much. Yeah. Take Thank you so care much. and Please, I hope would to like see to you take you again. some other day also. Yes, Hope to please. see you again. Hope to see you. Hope Yeah, to sure. join in sometime as and when I get the chance. When I'm Yeah, yeah, really sure. off Whenever my you are most shifts. welcome, anytime. You are most welcome, anytime. Take care. Thank you so much, and please take care of yourself. Please take care. And Oh. someone says that you sound so young. Live longer, and bless you. I'm not young. I've crossed my half century. No, Tell no. them. If someone is writing, you sound so young. Live longer. Thank you Yeah. very much. God Here it bless is. everybody. Here it is. This is the comment I was talking about. SSR in 2022. And please take care and Yeah. all the best Thank you for very much. everything. Thank you so much. Thank you. God Michelle, bless just everybody. fight for Sushant justice. Yeah, yeah. Thank you. ओके थैंक यू सो मच मिशेल थैंक यू सो मच मैं आखिर में कुछ आपके कमेंट्स पढ़ दूंगा फिर इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा और मंजुजा जी कहती हैं एब्सोल्युटली वी कैनॉट इमेजिन देयर पेन इन द मैटर ही डाइड जस्टिस फॉर एसएसआर अरुणा जी कहती हैं और राजेश लिखते हैं वी मस्ट रिमेंबर द मिस्ट्री गर्ल रनिंग एंड कलेक्टिंग एविडेंसेस फ्रॉम दीपेश सावंत एब्सोल्युटली एक जो मिस्ट्री गर्ल थी उसके बारे में भी काफी सारे सवाल उठे थे वो भी जानने बहुत जरूरी है कि वो गर्ल कौन थी आज तक उससे पर्दा नहीं उठा अपने देश की सिस्टम की बेकार है दैट्स ऑल मुझे ऐसा लगता है देखिए रेखा जी अगर आप ऐसा नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव रहेगा और सिस्टम अगर खराब है जी हाँ मैं मानता हूँ सिस्टम खराब है लेकिन हमें ही उसे ठीक करना है और हमें ही उसे ठीक करने का जिम्मा उठाना पड़ेगा सच अ जेम ही वाज आवर लेजेंड सुशांत और फरजाना तैयब बांग्लादेश से एक और हमारी फैमिली मेंबर लिखती हैं जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत थैंक यू सो मच फरजाना जी फ्रॉम राइटिंग दिस फ्रॉम बांग्लादेश थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हो सके तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और अपने कमेंट्स मुझे जरूर लिख के दीजिए मैं आपके कमेंट ऑफलाइन भी पढ़ता हूं मुझे आपके कमेंट हमेशा पढ़ने अच्छे लगते हैं थैंक यू सो मच वंस अगेन कोई बड़ी अपडेट होगी आपके सामने फिर हाजिर होंगे थैंक यू सो मच